Today, we introduce you to the three man of Jharkhand who has shamed his whole life for environmental protection. A resident of Jharkhand, Palamu, his biography is given to children in CBSE Kaksha 8 and ICSE 6 since 2010. Education and Popular Kaun Banega Crorepati and his biography in UPSC exams are asked questions, and Delhi Doordarshan has told the country and NI agency has told the whole world about his biography in 2008. Lal Kaushal Kishore Jaiswal of Palamu is the national president of the Worldwide Environmental Protection Campaign, environmental religious leader and leader of the Van Rakhi movement, environmentalist and social worker. Nepal, Bhutan, Singapore, Malaysia, Icon of Hindustan Award Padma Shri and Sundar Lal Bhagna of Chipko Movement and Gaurav Award of Shkanand 62 awards were honored by various organizations of 20 states of the country, including Governor, Chief Minister, Forest Minister, Vice President in 58 years. The protection of forest will be done not by sticks but by Van Rakhi under this Kaushalji has made thousands of acres of uproot bamboos deans against by doing Raksha Bandhan on 20 lakhs forest trees. If you want to stay alive, then all the people of the world have to adopt the 10 basics knowledge mantras of environment religion along with their religion. Kaushal adopted the natural disaster of 1966 Mahakal and the inspiration received from parents, adopted environmental religion and since 1967. 40 acres on private land and farmers have cultivated trees on unders on hundreds of hectares of land with public support. Today, Palamu division looks like a green forest. He said, "Think about what you will take with you. Plant a sampling. You will spend 7 generations together." Since 1967, free distributions of 50 lakh samplings and personal expense and plantations and Raksha Bandhan on 20 lakhs forest trees under the Van Rakhi movement, organizing seminars on environment religion have created awareness in environmental protection by touring the country. And you have created awareness about environmental protection by visiting the country, and you have created the world's first in the name of mother and father in Delhi Bazaar, Kaushal Nagar of Janmabhoomi Chhatrapur, in the name of National Mohanlal Khujra Parvati Devi Park and Biological Park. People of 128 districts of 22 states of the country, including Malaysia, Singapore, Nepal, Bhutan, have not only known but also recognized skills. Information about his work is available from PTI News Agency, New India Today, Daily News, and many languages. TV channels, tutors, YouTube, including Google information about the work of Tree Man and the pioneer of Van Rakhi movement, environmental religious leader, environmentalist Kaushal Kishore Jaiswal. जो पर्यावरण धर्म मंदिर की स्थापना आज के लिए आप शिलान्यास हुआ है, ये कितना जरूरी मानते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में ये क्या महत्व है इसका? आज के परिवेश में इससे बड़ा और कोई काम हो ही नहीं सकता है। धरती और ब्रह्मांड के 84 लाख जोनी जीवों की बचाना अगर है तो प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म के साथ पर्यावरण धर्म को अपनाना होगा। मैंने निःशुल्क पौधा वितरण सौरोपण निजी खर्चों पर आज 55 वर्षों से नेपाल, भूटान समेत देश के 22 राज्यों के 75 जिलों में 40 लाख से अधिक पौधों का निःशुल्क वितरण किया और लोगों में जागरूकता पैदा किया, अभियान चला करके कि आपको पर्यावरण धर्म को अपनाना होगा। पर्यावरण धर्म को यदि आप नहीं अपनाएंगे तो आने वाला पीढ़ी तो क्या हम ही नहीं बचेंगे। जैसे डायनासोर समाप्त हो गया, चील काढ़ा समाप्त हो गया, बहुत से पक्षी सब समाप्त होते जा रहे। क्यों? जनसंख्या विस्फोट, गाड़ी का अंधाधुंध बढ़ोतरी और प्रदूषण की आग ने सबको समाप्त करते जा रहा है। तो पूरी दुनिया में जो प्रदूषण की आग लगी है वह आग पानी से नहीं बुझेगी, शुद्ध हवा से बुझेगी। शुद्ध हवा बनाने का कोई उद्योग फाइटिंग नहीं है। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जब तक नहीं लगेंगे
सोचो साथ क्या ले जाओगे, एक पौधा लगाओगे, 7 पीढ़ी तक जाओगे। प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करने आने वाले पीढ़ी के स्वच्छ वातावरण से यही सब इसी कारण जो आज है 45 वर्षों से जो पर्यावरण धर्म के हमने प्रचार किया, देश दुनिया में लोगों को जगाया, इसीलिए आज जो है हम पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का पहला ज्ञान मंदिर जो है पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का आज शिलान्यास हमने किया है।